Good morning, students. In previous class, we studied about the expansion of universe. Expansion of universe, the origin of universe. Okay. Here the Big Bang in point of singularity. Big Bang in point of singularity. This Big Bang theory is given by George Lemaitre. Big Bang theory is given by the George Lemaitre. And here start this concept from the point of singularity. And here the Big Bang in point of singularity. Then what happened? Then Big Bang in the point of singularity. Here distribution of the matter in the different ways, and then here the distance between galaxies increasing. The distance between the galaxies is increasing according to the Big Bang theory. Expansion of the universe. Then here the distance between the galaxies increase. That here expansion of the universe, and all these happened after the Big Bang in point of singularity. Here the nothing else, only here point of singularity, then here the Big Bang and point of singularity, then start here the expansion of universe. Increased distance between the galaxies. So first of all, here the origin of the universe. The many galaxies form the universe. And now the topic, the star formation. So first here the what is here galaxy? The group of galaxies. Group of stars. Group of stars are called galaxy. Group of stars is called galaxy. So first of all, what is galaxy here? And the formation of the galaxy. The group of stars are galaxy, and the formation of the galaxies. Then the distribution of matter and the energy was not even in the early universe. What happened? Then here the Big Bang in the universe. Big Bang in the point of singularity. Then what? The distribution of the matter. Matter distribution was not even and the early universe. There here the starting of the यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की जब शुरुआत होती है, क्या होता है? हियर द बिग बैंग इन द यूनिवर्स. विस्फोट हो रहा है. बिग बैंग इन द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी. इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में क्या हो रहा है? विस्फोट. यानी हियर द बिग बैंग इन द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी. देन व्हाट हैपेंड? देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी. हियर द इन पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, हियर द लो वॉल्यूम एंड द infinite density and the energy. Then what happened? Distribution of the matter and the energy was not even in the early universe. तो यूनिवर्स की जो शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है यूनिवर्स का फॉर्मेशन. ठीक है, द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. हियर द मैटर एंड द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आर uneven in the world. Clear? Uneven in the universe. Then here these initial density differences gave rise to different gravitational force. Then here what? Different density found. Then different here the density. Then different gravitational force. The different density. Then here the gravitational force also different, and it caused the matter to get drawn together. So what happened? Then first of all क्या हो रहा है? Here the Big Bang in the point of singularity. Then here scattered all these here the energy and the matter in the universe. Then here the distribution of the matter and the energy is uneven in universe. Then here different density found in the different matters. So different density rise the different gravitational force. Different density है तो what here the rise? Here the different gravitational force. Then here the same density matter start together here. What happened? यानी matter क्या हो रहा है? एक जगह इकट्ठा हो रहा है. What happened? देखना. Here point of singularity. After here the Big Bang in the point of singularity, the energy and the density distribution uneven, and here the different density found, the different gravitational force, all these here the matter. Then here the same what happened? The same density matter get together. The matter to get drawn together. Then these form the base for the development of the
गैलेक्सी। अब यहाँ पे क्या रहा, सेम डेंसिटी का मैटर गैदर हो रहा है, देन हियर द ग्लेशियस क्लाउड गैलेक्सी फॉर्मेशन स्टार्ट हियर। डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सी स्टार्ट फ्रॉम द हियर। क्लियर? वापस से एक बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि व्हाट हियर मैटर एंड द एनर्जी वाज नॉट अनइवन इन द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स की जो शुरुआत होती है तो एनर्जी और मैटर है, विस्फोट के जो बिग बैंग होता है उसके बाद क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हियर, है ना, अनइवन फाउंड हियर द एनर्जी एंड द मैटर, देन हियर डेंसिटी डिफरेंट, देन हियर द डेंसिटी आल्सो डिफरेंस, देन हियर द राइज डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, देन डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, और ये जो मैटर है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट डेंसिटी वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस है तो क्या हो रहा है, देन हियर द स्टार्ट टू ड्रॉन टुगेदर, इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, और ये जो मैटर जो क्या हो रहा है ना, टुगेदर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या बेस करता है, बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सी, बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सी। और जो गैलेक्सी का डायमीटर होता है 18,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर, ठीक है, डायमीटर, इनका जो डायमीटर होता है, टोटल डायमीटर से मीन क्या हो रहा है, जैसे ये गैलेक्सी है तो इस गैलेक्सी का ये जो डायमीटर है, तो डायमीटर का जो डायमीटर की जो विड्थ होती है कितनी होती है, 18,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर। क्लियर? हियर द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सीज। अब यहाँ पे बेस मिल गया। अब नाउ हियर द स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार फॉर्मेशन हियर द बेस फॉर द गैलेक्सी जब फॉर्म हो रहा है, देन हियर द व्हाट इज in galaxies, here the many stars in the galaxy. So a galaxy starts to form by accumulation of the hydrogen gas in the form of very large cloud of the nebula. Clear? So what here, nebula, what is nebula? Nebula is the gaseous cloud. ध्यान रखेंगे, nebula कैसे कहेंगे, the gaseous cloud are called the nebula. The गैसियस क्लाउड है ना, गैसियस क्लाउड आर कॉल्ड द नेबुला। और ये क्या बन रहा है, स्टार्टिंग हियर द हाइड्रोजन गैस क्लाउड, देन हियर द गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, एक्युमुलेशन कैसे हो रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस द फॉर्म ऑफ ए वेरी लार्ज क्लाउड बन रहा है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस, और दैट इज कॉल्ड द नेबुला। इसे क्या बोलते हैं, नेबुला। तो व्हाट इज नेबुला, तो फिर आप ये लाइन लिख सकते हो, हियर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज नेबुला, ठीक है, व्हाट हियर द एक्युमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी लार्ज क्लाउड, दैट इज कॉल्ड द नेबुला। क्लियर? एंड द ग्रोइंग नेबुला, जब नेबुला इंक्रीज हो रहा है, ग्रोइंग नेबुला, इंक्रीजिंग द नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ द गैसेस, अब ये नेबुला, ठीक है, देन हियर द फॉर्मेशन ऑफ द नेबुला बनने के बाद क्या हो रहा है, इसमें क्लम्प्स ऑफ गैसेस, इसमें क्या मिल रहे हैं, क्लम्प्स ऑफ गैसेस। These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies। और ये जो clumps of gases है क्या बन जाते हैं, ये एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, इस प्रकार ये clumps of gases, गुत्थी जो झुंड गैस के ये एक जगह क्या हो जाते हैं, इसे इकट्ठा हो जाते हैं, गैसियस बड़ी बन जाती है, फिर इसलिए क्या बोलते हैं, गैसियस बडीज, जो क्लियर, गैसियस बडीज, एंड गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, एंड दिस गैसियस बडी इज कॉल्ड द स्टार्स। दिस स्टार फॉर्मेशन the time is 5 to 6 billion years ago। वापस से देखना एक बार क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, थोड़ा टिपिकल पार्ट है, हार्ड लगेगा बट इतना नहीं है ना, बार बार करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी इज हार्ड सब्जेक्ट, नो। क्लियर? हियर ए गैलेक्सी स्टार्ट्स द फॉर्म द बाय एक्युमुलेशन ऑफ द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता है कि एक गैसियस क्लाउड है, उस गैसियस क्लाउड में क्या है, हाइड्रोजन गैस, और उसे क्या बोल रहे हैं, नेबुला। क्लियर? सेकेंड स्टेप, द ग्रोविंग नेबुला, जो नेबुला है उसमें जो ग्रोविंग बढ़ती हुई यानी इंक्रीजिंग नेबुला, इसमें क्या हो रहा है, लोकलाइज द क्लम्प्स ऑफ गैस, इसमें क्या है, हियर द फाउंड द क्लम्प्स ऑफ गैसेस इन द नेबुला। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस हियर, एंड द क्लम्प्स ऑफ गैसेस, गैसों के हम कहेंगे कि यहाँ पे अलग अलग झुंड बनते हैं ना, क्लम्प्स बनते हैं, हियर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लम्प्स ऑफ गैसेस, और द क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू द डेंसर। अब जब क्लम्प्स क्या हो जाते हैं, डेंसर हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, डेंसर हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और इससे क्या बन जाते हैं, स्टार्स। द टाइम इज फॉर्मेशन ऑफ द स्टार इज 5 to 6 billion years ago। Here the formation of the galaxy and the formation of the stars।